अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मेरा टॉपिक वॉशिंग मशीन की मोटर को खोलना, जोड़ना और उसके फॉल्ट को दूर करना है। वॉशिंग मशीन हर घर की ज़रूरत है, ये हर घर में अवेलेबल होती है। उसमें नुक्स आते रहते हैं, लोग जो है उसको मिस्त्री वाला के पास ले जाते हैं उसको ठीक करवाने के लिए। हालांकि ये नुक्स जो है इतने बड़े नहीं होती है। अगर बंदे को थोड़ी सी समझ हो तो वो बंदा खुद भी इसको हैंडल कर सकता है और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें मेरे पास जो वॉशिंग मशीन है इसमें फॉल्ट ये आया है कि उसका जो बैरिंग था वो टूटा है। बैरिंग टूटने की वजह से उसके साइड वाली प्लेट्स होती हैं। प्लेट्स मीन के जो मोटर का मैग्नेट है उसको आपस में, और जो उसमें दरमियान में शाफ्ट होती है जो उसको चला रही होती है, वो जो है दबाव आने की वजह से उसकी प्लेट जो है वो टूट गई। अब जब प्लेट टूटी हैं तो वो फाल्टी हो गई। तो खैर मैंने उसको खोला। उसके बाद मैंने अब मसला ये था कि चूँकि उसके साइड से जो प्लेट्स लगी होती हैं वो प्लेट्स बाज़ार में अवेलेबल नहीं होती हैं, क्योंकि लोकल मार्केट में ये चीज़ें न्यू नहीं मिलती हैं। अगर ये चीज़ तरह न्यू मिलनी शुरू हो जाएँ तो फिर तो मसला ही हल हो गया। फिर तो हर मतलब जो है दुकान वाला चीज़ रखेगा और उसको नई वॉशिंग मशीन बंदे को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से जो है कंपनी इस चीज़ को नहीं बनाती है। तो ये चीज़ें इस तरह मिलती हैं कि आप किसी कबाड़ी के पास गए, आप किसी ऐसे इलेक्ट्रीशियन के पास गए जो ये चीज़ें लेता है, उनका यही कारोबार है। तो खैर मैं भी एक ऐसे ही बंदे के पास गया जिसके पास ये चीज़ें अवेलेबल थी। उसके पास ये सारा पुराना स्टॉक लोगों का दिया हुआ, मतलब किसी की चीज़ ख़राब होती है तो वो जाके उसे दे देता है, उससे थोड़ी सी रकम ले देता है। या जुड़वाने के लिए जाता है, वो चीज़ नहीं जुड़ती है तो वो चीज़ नाकार हो जाती है। अब बंदे ने उस नाकार से क्या करना है वो उसे दे देता है थोड़े से पैसों के बस। तो मुझे जो है प्लेट वहाँ से मिल गई। वो प्लेट्स मैं ले आया, 300 की प्लेट थी। तो अब अगर मैं किसी मैकेनिक के पास जाता उस मशीन को जुड़वाने के लिए तो वो कम से कम 600-700-800 रुपये मुझसे ले लेता। तो प्लेट्स को मैंने लिया, एक बैरिंग नहीं लिया, एक 80 रुपये का बैरिंग मिलता है। तो उसको मैंने है असेंबल किया, जैसे कि आप अगली मेरी वीडियो में देखेंगे कि मैंने किस तरह उसको जोड़ा, किस तरह उसको फिटिंग की, किस तरह उसकी कनेक्शन किए। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो हैं आम बाज़ार में नहीं मिलती हैं, लेकिन इन्हें ढूंढना पड़ता है इन चीज़ों को। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट लें, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, ताकि अगर आपके घर में कोई ऐसा मसला आ भी जाए तो आप उसको खुद हैंडल कर सकें, बजाय आप मैकेनिक के पास जाएँ। अपना टाइम ना वेस्ट करें, अपनी मनी वेस्ट ना करें। अगर ये चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा करके बचाएंगे तो तब आपको जो है नफ़ा हो सकता है इन चीज़ों से। तो मैं आगे चल के मेरी वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो हर बार की तरह मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि मैं जो है मेहनत के साथ इन चीज़ों को आपके सामने ला सकूं और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बेल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ।
you